Hello and welcome to the excelNsee IS, the newspaper analysis में आप सभी का स्वागत है. Today we are going to discuss the Hindu editorial page. और in today's newspaper there are the two important articles which are important for your the upcoming the civil service examinations. हम लोग 29th नवंबर 2025 के दिल्ली एडिशंस की बात करेंगे. In the first part, we have discussed about how this topic that is called the impartiality of the nominated governor, ये आपके एग्जाम के लिए relevant है. So before delve into the topics and before to move ahead, that why one should read the newspaper, ये सबसे पहली बात दो चार पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे कि why the newspaper is very very important. Okay, so newspaper के लिए एक जो सबसे important चीज जानना है आपको कि that whenever you prepare for the civil services or civils, so thereby current affairs is always very very important. Now for the current affairs, the newspaper is the most important and that authentic source, right? जनरली सिविल सर्विस के एस्पिरेंट या सिविल सर्विस की तैयारी में ये चैलेंज होता है कि दैट करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए एंड हाउ टू रीड द करंट अफेयर्स. और हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर्स की चर्चा करने लगते हैं, अलग अलग करंट अफेयर्स मैगजीन्स पे हम लोग फोकस करते हैं. बट दिस इज द अल्टीमेट सोर्स, है ना? दिस इज द अल्टीमेट सोर्स. जो एक बार न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएगा, दैट यू प्रिपेयर नाइसली, एंड दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड रीडिंग विल help to develop the skills in one hand. At the same time, it will also gives you the world view regarding any of the topic, right? World view regarding any of the topic. आपको current developments जो static subjects हैं और उसको dynamic element के साथ how you connect it, right? जैसे आज के जो topics हैं हमारे पास, the topic is the first topic in the morning we have discussed, that is called impartiality of the nominated governor. In the constitutional setup, you know that the governor is the constitutional head of the state. बट अभी के टाइम में विद द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द गवर्नर, अब देखोगे कि गवर्नर समटाइम एक्ट्स इन द दैट इज कॉल्ड वाइसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. तो देर बाय एनालाइज करना था कि हाउ द रोल ऑफ द गवर्नर इज ऑलवेज एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट न्यूट्रल पोजीशंस. अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में इसको हाईलाइट किया गया कि गवर्नर इज नॉट ए एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो देर बाय देर इज नो प्रॉब्लम विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के स्पिरिट पे कोई समस्या नहीं है, और रेदर द प्रॉब्लम विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन हु आर गोइंग टू होल्ड इट, राइट? तो ये सारी चीजें मॉर्निंग में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आफ्टर द सेशन आई एम गिविंग यू द वन क्वेश्चन जो मेंस नेचर का होगा, उसको आप लिखने की कोशिश करेंगे. इफ इट इज पॉसिबल, ट्राई टू सबमिट. Now let's go to the second topic, the second editor, that is the India's disaster response is slippery change for the federalism, right? So ये primarily दो तीन concept है कि एक तो disaster management, it is also important for your civil service examinations, but at the same time this the linking it with your the polity, कि how this federalism model is going to change, and how the federalism setup को भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स के जो एपिसोड है वो किस तरह से इफेक्ट करता है, एंड हाउ मोर थिंग्स टू बी डन इन दिस डायरेक्शन, राइट? दैट इज टू थिंग्स वी आर कनेक्टिंग हियर, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स, कि मतलब हमारे एनडीए में एक्ट 2005 में क्या प्रोविजंस है, एंड कनेक्ट इट विद द पॉलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द डिटेल्स, इसको हम लोग कवर करेंगे, एंड देन वी विल पिकअप कि दैट किस तरीके से हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, एंड हाउ दिस एडिटोरियल गोइंग टू डीपर इनसाइड जब आप कनेक्ट करते हैं दो सब्जेक्ट को. बिफोर टू मूव अहेड, जनरल स्टडी के सिलेबस में ये टॉपिक कहाँ पर बिलोंग करेगा? इफ यू टॉक अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बेसिकली आपका GS3 का पेपर है. द टॉपिक द डिजास्टर मैनेजमेंट and the polity, you know it, that is called GS number 2. So GS number 2 polity governance पॉपेट से इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक्ड है. सो कनेक्टिंग वन पेपर विद अनदर पेपर, एंड अब के ट्रेंड में आप बात करोगे फॉर द मेंस, दिस आर्ट यू नीड टू डेवलप, एंड दैट विल ओनली कम जब आप रेगुलरली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे. एंड दिस सीरीज दैट इज कॉल्ड द न्यूज़पेपर एनालिसिस विल गोइंग टू हेल्प यू द इनसाइड एडिटोरियल्स, मतलब इन बिटवीन द लाइंस क्या बातें कर रहा है उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. देखो, द टॉपिक बेसिकली ट्राइंग टू से कि दैट इट इज टेकिंग द केस स्टडी, और केस स्टडी को बताने के पहले लेट मी गिव ए ब्रीफ आइडिया कि दैट व्हाट इज द सेटअप व्हाट वी हैव, कि हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या क्या सेटअप्स हैं.
जब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो वी हैव द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, right? This is the National Disaster Management Act 2005. This law will provide an institutional framework how to respond during the disaster. Okay, so how to respond during the disaster. So that this setup will provide a structure, that is at the national level we have the National Disaster Management Act, then we at the state level we have the State Disaster Management Act, and at the district level we have the District Disaster Management Act with the Fine Arrangement Act. Now at the same time it also provide the funding mechanism कि how this fund framework will should work, कि इसके लिए रिस्पॉन्स फोर्स बनाया गया था, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स फंड, राइट? तो रिस्पॉन्स फंड के लिए देर आर कॉल्ड द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एनडीआरएफ एंड द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड दैट इज कॉल्ड एसडीआरएफ. दिस इज द मैकेनिज्म. तो अंडर दिस एनडीएमए एक्ट 2005 द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो सेंटर और स्टेट के थ्रू आता है. That center will contribute to the 75% of the corpus and state will contribute 25% of the corpus. इसका मतलब है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में 75% दैट इज नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए सेंटर विल कंट्रीब्यूट और स्टेट will 25%. But if it is special category of state, special category of state means if the northeastern states, the hilly states, so there the contribution comes like 90 is to 10. That is center will contribute 90 and the state will contribute 10. It is similar to the centrally sponsored schemes, है ना? Centrally sponsored scheme में भी the funding ratio goes like this. Now point is कि that whenever a disaster comes, so disaster में ये response fund का खर्चे होते हैं and that यदि सीवियर कैटेगरी का डिजास्टर है, कुछ डिजास्टर्स ऐसे होंगे जिसको हम लोग क्वालिफाई करते हैं इट इज इन द कैटेगरी ऑफ सीवियर. तो सीवियर कैटेगरी में ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सो एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का भी यूज हम लोग इसके मिटिगेशन के लिए करेंगे. सो दिस इज दिस सेटअप. नाउ दिस एडिटोरियल हाइलाइट्स दैट कि देयर इज कॉल्ड ए लैंडस्लाइड केस इन द केस ऑफ द वयानत. वयानत के केस में यदि हम लोग बात करेंगे, सो देयर इज कॉल्ड दिस वयानत लैंडस्लाइड. और इस वयानत लैंडस्लाइड के केस में ये देखा गया कि कि ये जो रिस्पांस फोर्स में मिसमैनेजमेंट देखा गया कि दैट केरला गवर्नमेंट क्लेम कि देयर इज लॉस ऑफ अराउंड 2200 करोड़, बट द यूनियन अप्रूव ओनली द 260 करोड़. ओके, तो यूनियन गवर्नमेंट ने कितना फंड एलोकेट किया? ओनली द 260 करोड़, बट द लॉसेस इतना कि 2200 करोड़. सो देयर बाय देयर इज कॉल लॉस ऑफ अराउंड दैट 1200 करोड़ एस्टिमेटेड लॉस एंड ये सब चीजें डेटास दिया गया है. सो देयर बाय इट इज क्रिएटिंग ए टेंशन कि बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है दैट बोथ द सेंटर एंड स्टेट शुड एक्ट प्रोएक्टिवली, है ना? बोथ द सेंटर एंड स्टेट शुड एक्ट इन कॉन्ग्रुएंस और एक फेडरलिज्म के स्पिरिट के डायरेक्शन में काम करेंगे. बट यहाँ क्या देखा गया कि दैट इज समटाइम द पॉलिटिक्स आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर, राइट? कुछ फैक्ट्स को हाईलाइट करने की बात होती है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट वी हैव, दैट वी हैव दिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड आफ्टर दिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वी हैव द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड. सो दिस फंड फाइनेंस जॉइंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट, अभी बताया 75:25, देन 90:10 फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट मतलब स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट. एनडीआरएफ फंड्स की बात करेंगे, इट इज फुल्ली फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, है ना? एनडीआरएफ फुल्ली फंडेड. सप्लीमेंट व्हेन देयर इज कॉल्ड कैलेमिटीज क्लासिफाइड एज ए सीवियर. ये सारे बेसिक बातें हम लोगों ने यहाँ पर आपको डिस्कस किया. नाउ सी दैट कि व्हाई देयर इज कॉल्ड टेंशन एंड स्ट्रेस इज क्रिएटिंग नाउअडेज. इसमें बोला कि फंडिंग के टाइम में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंडिंग mechanism why the problem come और सेंटर क्यों नहीं देना चाहता है, why the reluctance is there. So that's why this editorial highlights certain reasons. First reason this editorial highlight is that the relief norms are that outdated and rigid. Mostly हमारा जो डिजास्टर में जो फंड रिलीज करने का तरीका क्या है कि जनरली वी इशू द रिलीफ फंड दैट इज कॉल्ड पोस्ट डिजास्टर, एंड पोस्ट डिजास्टर्स का जो क्राइटेरिया है उसमें भी प्रॉब्लम्स है. सेकंड, द फर्स्ट प्रॉब्लम हाइलाइटेड कि द रिलीफ जो फंड्स हैं द अमाउंट गिवन ये मोस्टली इट विल गोइंग टू मीट द सब्सिस्टेंस नीड्स बट नॉट रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट, leaving the state fiscally exposed after the every disaster. What does it mean? Let me explain briefly, right? कि whenever I say the disaster, so disaster means what?
there is a loss of life as well as property. The loss of life as well as the property. This is the meaning of the disaster. Now लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि देर इज कॉल्ड उनसे जमीन छिन गई, उनके घर छिन गए, उनके मकान छिन गए, सो देर इज कॉल्ड लॉस टू द इन्वायरमेंट एज वेल. सो बेसिकली द पर्सन डिराइव हिज आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से क्या होता है, उसके लिवलीहुड्स, है ना. सो देर बाय जब उसका जगह छिन गया, सो देर बाय इन द डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट द अप्रोच वी फॉलो, generally we follow the pre-disaster management, then during the disaster management, and then we follow the post-disaster management. This is the three-pronged strategy, a cyclic process है. So pre-disaster, during disaster, and the post-disaster. Now when I say the post-disaster, it means the post-disaster involves कि जो ऐसे we call it rehabilitations. This is the post-disaster activity. That is called repatriations. This is called the post-disaster activity. That is called retrofitting. This is called the post disaster activity, retrofitting. Okay, so इसका मतलब है कि अब जो losses हुआ उसको ठीक करना है. At the same time we should also create the opportunity to grow, that is called employment opportunity, livelihood opportunity. So हमारे पास rehabilitation policy या disaster mitigation में ये सारे involve होना चाहिए. Point is that कि जो funds दिए जाते हैं वो mostly focus कहाँ पर होता है, they basically take care about the needs, the subsistence need. So opportunity तो loss हो गया, gone हो गया ना. So this is why it is not called the very substantive. Second, the problem it highlighted, that is called ambiguity in classification with the terms like the severe. जैसे हम लोग बात करेंगे कि जो severe disaster यदि declare होता है, so it means it will additional funds should come from NDRF. The question is that कि this NDMA Act, that is 2005, that is National Disaster Management Act 2005, कहीं भी इस टर्म को डिफाइन नहीं करता कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस सीवियर डिजास्टर. सो देयर बाय इट बिकम सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव होने के चलते समटाइम्स दैट इज कॉल्ड पावर एंड पॉलिटिक्स कम्स इनटू द पिक्चर, जिसके चलते एक रैशनल एलोकेशंस भी नहीं हो पाता है. द थर्ड फैक्टर इट हाइलाइटेड दैट द एड रिलीजेस आर प्रोसीड्यूरल एंड नॉट ऑटोमेटिक. द डिजास्टर कम्स, हर समय आप देखो कि साइक्लोन्स है, जैसे श्रीलंका इज फेसिंग दिस, देयर इज कॉल्ड ए साइक्लोन प्रॉब्लम, जिसमें कि हम लोग दितवाह की बात करेंगे आज थोड़ी बहुत. सो द साइक्लोन प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका कॉजिंग ए लॉस टू लाइफ, मोर देन 300 पीपल्स गॉट डेड. भारत ने अभी दैट इज एक जो इनिशिएटिव शुरू करा है, दैट इज कॉल्ड सागर बंधु इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द हेल्डिंग हेल्प टू द श्रीलंका. पॉइंट इज दैट कि ये जो द फंड एलोकेशन है, एड रिलीज, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है सिस्टम है. दिस इज कॉल्ड प्रोसीड्यूरल. If it is procedural, then might be there are the bureaucratic challenges, bureaucratic problems hoga. It leads to the corruption and all these manipulations. Third problem it highlighted. Fourth problem and final problem say finance commissions, the allocation criteria is also weak. It is a very important thing and highlighting this editorial. बोलते कि फाइनेंस कमीशंस जो एलोकेशंस के क्राइटेरिया है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन द रिसोर्स एलोकेशंस विल बी डन. उसके बेसिस क्या क्या है, द पॉपुलेशन. उनके बेसिस क्या है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल कि that if a disaster come, let's say in the Karol Bagh, right, the Karol Bagh में आता है. If let's say disaster come in let's say Lalpur Ranchi, so this area में जो लॉस है, इसमें से 5 किलोमीटर के डायमीटर में भी जो लॉस है, और किसी एक प्लेन एरिया की बात कर लेते हैं, वहां पर कोई डिजास्टर आता है, so the loss in this area is relatively lesser. But we cannot adopt the same type of approach. The same thing is highlighted कि जो population के basis पे, the total geographical area के basis पे, इस तरीके से जो ignores the such actual hazard patterns, thereby we should follow कि per capita losses कितना हुआ, उसके according हमारे पास financial aid provide करना चाहिए. So this mechanism adopted by the finance commission is also outdated. इसको भी ठीक करने की जरूरत है. So basically editorial say कि due to this disaster response fund या फिर that is called financial assistance during this disaster, it causes a drift in the center state relations. आपको दिखता है कि center is acting towards itself, not that is called, it is also affecting this federal setup. Federal setup, are you getting कि that is center and state, there are the two entities and the center and state will act with in together with each other. यही essence है competitive cooperative federalism का. Now these are the problems highlighted by this the article, that why this is happening. The problem is with respect to the relief norms जो है उसके साथ problem. Second, ambiguity with the classification. Third is that is with respect to procedural glitches.
Fourth is Finance Commission mechanism and the criteria. And this Vayanath episode is acting as a case study that how this government is not acting in the spirit of the constitution federalism. आई बस समझ में. Now आगे देखेंगे कि दैट इसको ठीक कैसे किया जाए. What should be the way forward? Now, if we talk about the way forward, then we should learn from the global practices. दुनिया में बहुत सारे जो अलग कंट्रीज हैं वहां पर किस तरह से डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट होता है उसका हम लोग कुछ लर्निंग लेसन्स ले सकते हैं. This editorial highlighted some of the countries. For example, if you take the example from America, so in the America there is a system called this FEMA. FEMA refers to that is called the Federal Emergency Management Agency. So United States may what type of approach they follow? The US follow that is something called per capita damage. Okay. So the funding allocations किसके according होता है कि that what the per capita damage individual basis पे. So it will be more focused, more objective. So इस तरह की चीजें हमको भी incorporate करना चाहिए हमारे management mitigation act में. If you take about the Mexico, so Mexico there is a system that is called FUNDAIM, that is fund for the natural disaster. कि whenever there is called rainfall or that wind limits which is exceeding जब out of जाएगा so FUNDAIM के according fund release किया जाता है, right? So the another chapter we can take a lesson from the Philippines. Philippines triggered the quick response fund through the rainfall facility. African Caribbean country used the satellite data for the rapid payouts. Australia linked the federal aid to the states relief spending relative to the revenues. So primarily what actually trying to say that these are the mechanism generally follow in the world countries or worldwide nations. जैसे so America may what type of system follow? They follow the FEMA system. In Mexico, there is called FONDAIM. That is called Philippines, Australia, Africa, many of the Caribbean country, they follow more or less that is called per capita damage threshold type of system. So we should also amend accordingly and we should also brought changes in our the system as well. Now, rebuilding the federal spirit, थोड़ा पॉलिटी को भी यहाँ पर लिंक करने की बात हो रही है कि now the 16th commission के पास एक अपॉर्चुनिटी है that is to reframe this architecture problem with respect to what that is called finance commission the allocation criteria. So finance commissions के role कि how the proceeds of the net taxes it should be divided between the center and state, so thereby allocation criteria ये होना चाहिए, right? So it should focus on also comprehensive the vulnerability index and ensure that disaster assistance remains grant based rather than the debt based. ये कैसा होना चाहिए? Grant based rather than debt based, right? The system that enable quick rule-based response will serve both the tiers of the government and most importantly citizens far better off than that they mired in the procedural red tapeism. So this is the article what it is highlighted that is rating the disaster response with respect to the slippery slope for the federalism. So in essence what we say that this topic basically trying to link the topic that is disaster management with respect to the concept of the federalism that is called polity. Okay, so this is a very important article and very nicely been delineated here by the editor, right? अब इसमें से हम लोग कुछ और एडिशनल बातें कर लें ना. यू नो दैट कि हजार्ड ऑलवेज हैज ए पोटेंशियल टू डिसरप्ट द लाइफ एज वेल एज द प्रॉपर्टी. सो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डिसरप्ट करने का पोटेंशियल को हजार्ड बोलते हैं, राइट? सो हजार्ड इज इनएविटेबल, हजार्ड तो कहीं भी हो सकता है. नाउ व्हेन दैट हजार्ड विल बी कन्वर्टेड into the impact means already the loss of life and property occurred, that is called impact. So impact is called the disaster, right? So disaster mitigation के लिए we have the National Disaster Management Act 2005, right? It provide a institutional as well as framework for proactive response during the time of disaster or even during the disaster. Now world context की बात करेंगे, so we have the Sendai framework. So Sendai framework will provide how to act and mitigate during the disaster. इसके पहले क्या था framework? That is called Hyogo protocols. So Hyogo protocol के बाद अभी Sendai framework में काम होता है और Indian context की बात करेंगे so NDMA Act. So इसमें कुछ कुछ limitations है जिसको इसमें चर्चा किया गया है. Hopefully this discussion will help you to go through the articles at home now. अपने न्यूज़पेपर को देखिए, पढ़िए एंड along with this video जो important points note down करना हो वो उसको note down करिए. And similar thing, one tips I would like to advise, whenever you go to read an article or editorial, उसके जो points को small brief points में note down करें और अपने पॉलिटी के notes या जो भी specific subject हो वहीं पर उसको एक additional page add on करें.
So it will improve and it will more make your notes comprehensive. Okay. So this is the important article discussed today. Along with this article, let me share few more current affairs topic आज के द हिंदू में कवर किया गया है. सो कवर करने की बात करेंगे तो दिस एडिटोरियल के साथ साथ अदर न्यूज आइटम्स की बात करेंगे विच आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो वन सच टॉपिक इज योर द साइक्लोन दितवा, दैट इज साइक्लोन दितवा. Now if I talk about the cyclone ditwa, so cyclone ditwa is in the context of the श्रीलंका. श्रीलंका में एक जो साइक्लोन आया हुआ है दैट इज साइक्लोन दितवा, और इसके चलते आप देखोगे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मोर देन द 300 पीपल्स गॉट डेड ड्यू टू दिस साइक्लोन. मैंने साइक्लोन मिटिगेशन मेजर्स के केस में बात करें सो अभी भी श्रीलंका को बहुत कुछ करने की जरूरत है. बट इन दिस आवर ऑफ द क्राइसिस, इन द आवर्स ऑफ द कैलेमिटी, है ना, दैट इंडिया इज प्रोवाइडिंग विद द हेल्पिंग हैंड. इंडिया ऑलवेज इंडियन ओशन रीजन में एक्टिंग इज ए बिग ब्रदर्स रोल, और हमारा जो हमेशा से इस तरह से पॉलिसी रहा है. सो देयर बाय वी स्टार्टेड द ऑपरेशन द सागर बंधु. सो इट इज इंडिया एज एन हेल्पिंग हैंड की तरह टू हेल्पिंग द श्रीलंका स्टार्टेड द ऑपरेशन सागर बंधु. Okay, this is a important current affairs, the operation the Sagar Bandhu. So what the objective of this operation? The operation Sagar Bandhu will provide relief supply to the Sri Lanka. It is like to the provide relief supply to the Sri Lanka. It is important article for your international relations linking the India and Sri Lanka bilateral relations. So cyclone Ditwa याद रखिएगा. This is in the context of the Sri Lanka. Now some of the additional topic you can take it here. Another very important the news today is that is called the NISAR, right? There is called Earth Observation Satellite launched by the NISAR, that is called NASA and ISRO. The full form of the NISAR is the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. So it is the NASA ISRO Synthetic. Okay, it is the NASA ISRO Synthetic the Aperture Radar. It is aperture radar. It is the full form of the NASA. This is important for you, the science and technology, right? Space technology specifically. Now, NISAR, it is a Earth observation satellite. It is an Earth observation satellite. It is the first satellite which is developed by the ISRO and the NASA. This is the most important point. So you can jot it down the few points here. It is called Earth observation satellite. It is the first satellite developed and jointly by the NASA as well as the ISRO, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस. अब देखोगे कि इस सैटेलाइट को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, और इसका जो मिशन लाइफ है इट इज द 5 years. व्हाट इज द मिशन लाइफ ऑफ दिस निसार द सैटेलाइट दैट इज कॉल्ड निसार प्रोजेक्ट? इट इज द 5 years. ये जो प्रोसेस दैट इज कॉल्ड निसार है, that is called NASA ISRO synthetic aperture radar, it will launch into the 4 phases. So there are the 4 phases, that is the phases are the launch phase, second the deployment phase, third is called the commissioning phase, and fourth is called the science phase. ये important है, right? So the NISAR, that is this aperture radar, will have a mission of the 5 years. It is operating, it is launching into the 4 phases: launch phase, deployment phase, the commissioning phase, and then into the science phase, right? So it is the jointly developed by the NASA and the ISRO. Important point. From where it has been launched, it is the Satish Dhawan Space Center, right? It is a place that is called Satish Dhawan Space Center. Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, right? Now, with this article is highlighting that how successful story of the ISRO, Indian Space Research Organization, is also adding one of the golden chapter in its that is called the scintillating past. So ISRO इसको लॉन्च करता है, इसकी कैपेसिटी को इंप्रूव करने की बात करता है. दिस इज द इंपॉर्टेंट आर्टिकल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि दिस इज the NASA ISRO synthetic aperture radar. It is what it is called Earth observation satellite system. Now, when I say the satellite, so what is satellite? Satellite is anything which is the revolving around the Earth. That is called the satellite. जैसे moon is an natural satellite to this Earth. So satellite उसको बोलते हैं कोई भी Earth के चारों तरफ revolve करता है. The object is called the satellite, right? Now, in space science or space technology, you have studied how many category of satellite?
So इसको याद रखने का तरीका क्या है? This is called the RNS. Okay, so it is called RNS. So how many type of satellite? There is called the remote sensing satellite. There is called the N refers to navigation satellite. N refers to the navigation satellite, and S refers to, that is called geostationary satellite. Okay, geostationary satellite. So there are broadly this category of the satellite system. We have the remote sensing satellite. Then they are the navigation satellite, and they are called the geostationary satellite, right? So geostationary satellite ये अलग-अलग orbits पे put किए जाते हैं. Accordingly, we have the orbits like low Earth orbit system, we have the medium Earth orbit system, and we have the high Earth orbit system. These are called orbits. Orbit refers to the trajectories where the satellites are actually placed, right? So I hope the sufficient information you got about the NISAR, that is NASA ISRO synthetic aperture radar. Along with this, एक और important data आप यहाँ से note down कर सकते हैं, that is कि this the Donald Trump, the president of the USA, said कि there shall be the complete the stop of migration from the third world country. Okay, the complete stop over the migration from the third world countries. So UPSC always has a trend that इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि that in the recent time there is a word in the news just like the third world country. What do you mean by the third world country? Who would be the members under the third world country? इस तरह से चीजों के लिए आप तैयार रहेंगे. So there is an incident in USA कि African national has killed, कि वहां पर कुछ यूएस के नागरिक को मार दिया गया. That's why that Donald Trump, the president of the USA, has announced कि gradually we are moving and working to stop the complete migration from the third world country. जैसे जैसे अफगानिस्तान की बात करोगे, है ना, इराक की बात करोगे, क्यूबा की बात करोगे, इन कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर रखा गया है, और इसमें जो भी लोग यूएस में माइग्रेट करते हैं उनको रोका जाएगा, उनको ऊपर बैन लगाया जाएगा. ओके, सो इस तरीके से आप सोच समझ सकते हैं कि दैट हाउ द यूएस इज रिएक्टिंग टू द डेवलपमेंट्स. सो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इट इज इंपॉर्टेंट a little bit for your the current affairs part. So these are the important topics, okay, from this the Hindu newspaper. The editorial covers today about the governor. One article it covers about this the disaster management and the slippery slope of the federalism. इसके बाद निसार की चर्चा की अपन लोग, and then we have discussed about the cyclone Ditwa. Then there is another development that is called the third world countries. So now you can read the newspaper. Now at last but not the least, I am leaving a mains type of question. जब आप गवर्नर की चर्चा कर रहे थे तो उस समय भी हमने इसको डिस्कस किया था, बट द क्वेश्चन, लेट मी शेयर एंड लेट मी रेफर. द क्वेश्चन इज कि दैट देयर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस क्या बोलता है कि दैट द प्रेसिडेंट के आर नारायणन ड्यूरिंग दिस 50th एनिवर्सरी ऑफ आवर द रिपब्लिक, उनका एक ऑब्जर्वेशंस था कि दैट so we have to consider whether it is the constitution that has failed us or whether it is we who have failed the constitution. Comment, and you have to write in around the 200 word. I am writing the questions कि that ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो सकता है. You should write in the 200 words, right? What is the question of the day? That we have to consider, we have to consider that it is the constitution, it is the constitution that has failed us, that has the failed us, or it is the we, it is the we that have failed the constitution, that have failed the constitutions. Okay, comment. So you have to attempt this question, you have to write in answer in approximately the 200 words. Okay, 200 वर्ड में इसको लिखने की कोशिश करेंगे. लेट मी गिव ए प्रोटोटाइप. आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे. इसमें क्या बातें हो गई कि देयर इज एन ऑब्जर्वेशन. वी ऑलवेज से कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. So and so, sometimes we say कि is it the right time that we should move towards the presidential form of government, क्योंकि हमारे संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की गई है, लेकिन आप देखते हो कि डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट ऐसा कुछ होते रहता है. तो समटाइम्स इट से कि shall it is the time that we should move to the presidential system.
उसी तरीके से दैट आप वो देखोगे कि दिस टुवर्ड्स द 90s देयर इज ए क्वेश्चन कि हमेशा समस्याएं कहाँ पर होती थी? संविधान में। तो उस समय हमारे एक्स प्रेसिडेंट के आर नारायणन उनका ऑब्जर्वेशन था कि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, इट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन द वर्ल्ड। ओके, द फाइनेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन द वर्ल्ड। कहीं पर इस तरह के फाइनेस्ट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन प्रोविजंस नहीं मिलता है, एंड इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। दुनिया के किसी भी संविधान में इतने आर्टिकल्स, इतने पार्ट्स, इतने चैप्टर्स नहीं मिलते हैं। देयर इज सिंगल डॉक्यूमेंट व्हिच इज प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट, and thereby enabling provisions as well as organismic provisions in our constitution. So thereby our constitution is finest in the letter as well as in spirit. दोनों को एक साथ रखेंगे, एक साथ समझेंगे, तभी हमको संविधान समझ में आएगा। सिर्फ लेटर में पढ़ेंगे, स्पिरिट में नहीं, तो फिर आपको समस्याएं देखने को मिलेगी। तो देर बाय हमको खुद पे सोचना चाहिए कि जैसे हमने कैसे संविधान को फॉलो करा। सो दिट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर एक्स प्रेसिडेंट कि दैट वी हैव टू कंसीडर इट वेदर इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज फेल्ड अस, कि हम लोग संविधान को अभी तक समझे ही नहीं। संविधान कभी भी फेल नहीं कर सकता है। संविधान इज एन इनेबलिंग डॉक्यूमेंट, रादर इट इज द वी दैट हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हम लोग संविधान को सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर की तरह मानेंगे तो फिर उसके स्पिरिट को नहीं समझ सकते हैं। तो इन टॉपिक को लेके ये कमेंट है, यू हैव टू राइट द आंसर इन ए बैलेंस्ड वे and approximately 1200 word you should attempt to write it. So this is the editorial discussions of the day. Okay, similar discussions we will continue with this। आने वाले समय में जो प्रीलिम्स बैचेज बनेगा उस समय तक आप लोग एक अच्छे पोजीशंस में होंगे। एंड एडिशनली editorial reading you should know, because the Hindu is the part and parcel of your the preparations. You are a true aspirant, a dedicated and a serious candidate who thinks to appear in the coming 2026 civil service examinations, PCS examinations। जो लोग सोच रहे हैं कि एक ही बार में क्रैक करना है, develop the habit how to read the newspapers, and newspaper seriously पढ़ना है। newspaper is a part of your syllabus, ऐसे करके पढ़ना है, right? So this program will help you a little bit, आपके एफर्ट को थोड़ा रेस्टलाइज करेगा कि आप इस वीडियो के साथ साथ एक बार अपने न्यूज़पेपर को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको अपने न्यूज़पेपर या फिर नोट्स में नोट डाउन करके रखेंगे। So take care guys. In the next class, we will help you with the more number of the topics. We will going into the deeper inside of the editorial analysis, and similarly day by day we will cover up your the current affairs aspect.